So as you know, that institute here in Pune, that there's a global pharma academy, and it is already set to educate all the peoples for the medical field and other courses also. Can you please tell me what exactly you think about medical coding is? Very rough, a very layman language, not much. Right, you So might be having a very general idea about it, what exactly it is. actually, whenever we attended any webinar, recently I have attended one our seniors seminar alumni of Mm-hmm. our university. Mm-hmm. सर उसमें वो दीदी एक्चुअली एक ले रही थी, हम लोग की सीनियर्स थी। तो उन्होंने एक्चुअली हमने पूछा दीदी ये मेडिकल कोडिंग में क्या है? तो एक्चुअली हम्म उन्होंने कहा कि जब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी कंपनीज हैं वो एक हम्म कोड रिप्रेजेंट करती हैं कोई भी डिजीज के लिए। हम्म वो चीज कंपनी में ही चलता है। जैसे किसी भी डिजीज का EP 130, जैसे किडनी डिजीज में कुछ कुछ कोड होता है। तो हम हम्म लोग ना कोई भी लिख के, जैसे कोई भी हम हम्म लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हम्म जैसे सर क्या बोलेंगे, मतलब मेडिकल में कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन है जो कि मेडिकल लैंग्वेज में है टोटली। तो वो चीज को वो कोड, एक कोड होता है, वर्ड होता है, उससे वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और उस वो ही चलता है हमारे इंश्योरेंस कंपनीज में। उससे पता चलता है कि इस बंदे को ये डिजीज है। बस इतना हम लोग को बेसिक नॉलेज है सर, जस्ट ज्यादा ठीक है नहीं। ठीक है। Okay, thank you. And anybody is having any idea सब about it? बेसिकली ये जो नॉन मेडिकल फील्ड के होते हैं उन्हें हेल्प करता है, जिससे उन्हें मतलब मेडिकल, पूरे मेडिकल के बारे में ना पता चले और वो एक रिप्रेजेंट कर सके कोड, जिससे उनको हेल्प हो। Okay. Anybody want to share? Okay. So, अभी आपने जो बताया, I accept that, but it is not exactly the full. Okay. अभी आपने बताया कि डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए इंफॉर्मेशन। ओके, दैट इज अ वन पार्ट। दूसरे ने अब इसने बताया कि ये होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करता है एनआईसीडी। ठीक है, वो भी एक पार्ट है, बट दिस मेडिकल फील्ड इज अ पार्ट ऑफ यूएस हेल्थ केयर। ओके, यू नो ऑल यू व्हाट इज द यूएस हेल्थ केयर? So first I would like to tell you that medical coding field is completely based on US healthcare. In our India, we don't have this domain. So whatever you are going to work on any project or any company, take in mind that you will be getting the work from US side. So US is outsourcing all these projects to India, okay, and Indian peoples are decoding their medical records. Okay, so keep this thing in little bit this in time. And now what they are saying is, I really accept that ये ऐसा होता है वैसा है, but medical coding is purpose is only to get the payments to the physician or the hospital. Only that person, only that reason they have introduced this domain as a medical coding. Okay, now there is no other reason to introduce this medical coding at all in this field. तो मेडिकल कोडिंग का यूज यही करना है कि फिजिकल फिजिशियन को अप्रोप्रिएटली पेमेंट हो जाए जो सर्विस वो पेशेंट को दे रहा है। Okay, so we'll see these things in very brief. So what is medical coding? Our today's agenda would be what is medical coding, importance in healthcare, types of codes. In that we'll say how the codings are exactly doing, coding systems, how we are exactly code the report which is there, career opportunities likely अभी हमने देखा था कि हमको salary चाहिए, ठीक है वो भी मिल जाएगा, and last at the time we will see the question and answers. Okay. So that's like I said कि हमारा जो medical coding field है, it is completely based on US healthcare. Okay, and the US healthcare का budget जितना भी होगा, that kind of thing will be getting as a project, because you know that US peoples are very cautious to about their health. They are very conscious. If in the morning if you get up and you have some sneezing, so they will directly rush to the hospitals. Okay, they will directly rush to the physician, and they are very health cautious. They will inquire, they will get medications. So how they are very maintain themselves and their all these aspects. For that point of view, the US government is spending almost 50 to 60% of their budget
in this medical field and medical hospitals, medical insurances. So these slides introduces that there are the five industries US which are contributing in their GDP. That is first actually healthcare, where we are exactly belonging to. Then the technology, construction, retail, and non-durable manufacturing. So you think about that, how much the GDP is participant in US country. So definitely the business is still going on, and we are expecting lots of tremendous growth in coming years. So this is the most important thing. But the one drawback is that we have to totally based on the US. Okay, and they don't take this thing as very dependentful, because we'll be getting the business continuously after this what's are happening around it. So don't worry about that, because it's a pharmaceutical care. It includes pharma, it includes bio, it includes healthcare. And you know that, just I will give you a simple example. You know that 2019 the corona COVID was there, correct? Yes, guys. Yes, Yes. sir. Yeah, Yes, sir. correct. Yes, So every industry was, very struggling drastically. Automobiles, there were nobody was going to purchase the car. Every sector was very badly hampered. Only this healthcare sector was booming. Still remember those days. My friends were all others in other sectors, like somewhere was doing mechanical, somewhere some was in civil. So all were sitting at home. So few of them lost the jobs. But I was the fellow. My team, my colleague, my company was doing overtime that time, and we really was hesitating to do the work. Even apart, my all friends were struggling to get the work. So this is the importance of a healthcare. This field is never gonna die. Take it in my mind. Any time you can say healthcare, we will survive any cost. Even if there is no recession, no fear of a recession, no reason of a jobless. But at the end, we should have that much of skills in between you. So that kind of skill here we are going to build in yourself. So this presentation is are going to give you help on how you should develop your skills with the help of CPC certification in this medical coding field. So I'll move to the next slide. See, again, I will show you that. See the graph. In 220, it was here. 220, it was here. And we are expecting the huge, for 9.8% should be the market will be going to raise. And this is sourced by Gravida's viewerscreen.com. This ad, and yesterday I saw this, which I'm very, very like happy that still we can live with this industry. Otherwise, people are there who stays in 5 to 6 years, and again they are switching to other country, other domains, and they start with a zero. But here you should not need to do like that. You can anyhow survive. But the thing is, you have to upgrade yourself every time. Every time you have to upgrade yourself, you have to get all the necessary things in you. You have to build yourself like that. You have to keep awareness. You have to get some credentials. You have to get some certification. Then only you can survive in this medical coding market. So this is how it is. Now let's see what is the medical coding. Just like I heard some good definitions. Few are like some for the like he said, like this is a representation of code is like the hiding the information. But medical coding is exactly the thing is, it is just translating the healthcare diagnosis procedures equipments into universal code. Okay, this is only the half definition that I have introduced at this moment. Now let's have consider why we need to give a diagnosis as a particular code, and why we need to code a procedure. Okay, so for the US healthcare and for Indian healthcare, there are huge difference. I mean, so people have already have attended few webinars. They might be knowing that there are lots of difference in between how the Indian healthcare is going and how this. Now you just tell me, any there are, I can see 30 people. How many of you are having a health insurance? All 100%? No. No, no, right? Yeah, no, that's how it is. yes, Yeah, but and how about your Aadhaar card? All of us PAN card, having PAN card, pan Aadhaar card. also.
having. Yes, Almost we have. 100%, right? Yes, sir. 100%, right? Because another thing is we need this Aadhaar card and PAN card for our daily transaction. किसी को लोन लेना है, कुछ करना है. But यार हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस नहीं, वो तो ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा. Like this is the thing, right? This is the exactly opposite for US government. US health government has mandatory for every citizen to should have them as any kind of insurance they should have. ये सब उनका इतना बड़ा परफेक्ट सिस्टम है कि उन्होंने सब सिटीजन्स को हेल्थ केयर मैंडेटरी किया है, इंश्योरेंस मैंडेटरी किया है. तो ये इंश्योरेंस क्यों मैंडेटरी किया है मैं भी आपको ये बताऊंगा. क्योंकि क्या होता है इन इंडिया, सी इफ ए पर्सन इज हैविंग सम कफ और कफ कोल्ड, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रिसेप्शन के पास मिलते हैं, उसको बोलते हैं मेरे को ये हुआ है वो हुआ है, एंड डॉक्टर के पास जाके उसको ट्रीटमेंट में चेकअप करते हैं और डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, ठीक है. बट इन यूएस में ऐसा होता नहीं है. उसके उसके लिए इसको बोलते हैं आरसीएम, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट. इसमें medical coding it's a one part. I will explain you that slide in between. Okay, so यहाँ पे medical coding it's not the everything, it's only a piece of a cake. I will say there are lots of things you can do other than the medical coding, but for the entry level you have to be start as a coder only. You have to should know how this coding is done. So what is happening in US healthcare कि जब पेशेंट वहां पे जाता है, he रिसेप्शन के पास जाता है, he gives his all the details, his demographics, उसका एज वगैरह वगैरह, उसका उसने कुछ see this things it starts from beginning from the reception to the end. ओके, तो वहां पे जाके वो अपना सब इंफॉर्मेशन देता है, डेमोग्राफी देता है. हम यूजुअली हमारे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा नाम लेता है, फोन नंबर लेता है, ओके दैट्स इट, और मैं कहाँ से आए हो वो लेता है. बट इन दिस फील्ड, in this RCM cycle, the patient should give all his information, his age, his background of history, his maternal history, his paternal history, whether anybody is having cancer and past. So this thing is start from there. So जैसे ही इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है, देन ओनली इज अलाउड टू इंट्रोड्यूस टू द डॉक्टर्स. अभी डॉक्टर के पास जाने के बाद ही जस्ट अपने डॉक्टर को बोलता है कि सर मुझे कफ हुआ है, मुझे फीवर हुआ है. So these things when the doctors examines the patients, okay, so at the end जब भी वो एग्जामिनेशन होता है तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है, और वो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके बाद ही उस पेशेंट को फार्मेसी में जाके मेडिसिन मिलता है. अगर उस बंदे के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तो he will not get his medication anywhere, any corner in the US city. So take it that because this system is really built in such a way, and that's where our role is very important. वो कैसे मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल कोडर की जरूरत क्यों है यूएस हेल्थ केयर में. सी अगर मैं पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, ओके, सो डॉक्टर के पास जाने के बाद से मेरा जो विजिट है तो एंड होने तक, unless and until I get the prescription, everything is recorded, and that recorded form just अभी एक बीच में एक फील्ड आई थी देखो, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन. एनीबॉडी नोज अबाउट दैट मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन? No. So see, medical transcription was the previous field when there was no medical coding. So in that field was used to people will do like अभी जो पेशेंट और फिजिशियन का इंटरेक्शन जो होता था, तो वो है ना सब वो वहाँ पे ड्राफ्ट्समैन थे, वो सब वो रिकॉर्ड करके लेते थे और पीसफुली बैठ के वो सब हाथ से टाइप करते थे, रीड करते थे, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और ये जो सब रिकॉर्डिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. इट्स कॉल्ड एज अ मेडिकल रिकॉर्ड. तो हमारा जॉब यही है कि जो भी पेशेंट और फिजिशियन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है, दैट रिपोर्ट वी कॉल्ड एज एन मेडिकल रिकॉर्ड. एंड दैट मेडिकल रिकॉर्ड, उसमें जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया गया था, दिया गया है और गया दिया जाने वाला है, that we have to code in alphanumerical forms. And why we need to do that, I will also explain to you. Just like an example, I have coded here then diabetes type 2, that the ICD code is
T11.9। अगर पेशेंट को डायबिटीज का कोई सिम्टम्स है, ओके, और वो लेके आया है फिजिशियन के पास, are you guys getting my point, or you think I am very rushing hard and fast? Just stop me there, okay? Sir, sorry to interrupt you, but you are Mhm. on first slide only, Global Pharma Academy. Okay, you didn't. Let's stop The sharing. slide is not changing. Okay, okay, okay. Thank you so much for. Just wait. I will just reconnect again. Can you see guys now? Yes, Is it? yes. Sir, Okay, yes, sir. okay, okay. If you should have stopped me there, man. See, this slide. This was agenda slide. Yeah. This is the how the graph is. This is the coding market. Okay, and this is what is the medical coding exactly. So, medical coders issues. So, where I was here only. तो जब भी पेशेंट और फिजिशियन के साथ इंटरेक्शन जो होता है, take an example. If a patient is having some cough or something, okay, so patient को जो भी होता है वो फिजिशियन क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ओके, और एक उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, दैट वी कॉल्ड एज अ मेडिकल रिकॉर्ड। ओके, वो मेडिकल रिकॉर्ड में सब पेशेंट का रिव्यू ऑफ सिस्टम होगा, उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका कंप्लेंट ग्रांटेड होगा, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका मेडिकल डिसीजन मेकिंग होगा कि उसमें फिजिशियन particularly mention करेगा the patient is having this condition due to this reason, and for that I have to do lab, I have to do x-ray, I have to do ct, I have to admit, everything will be mentioned. So our role is that only whatever the medical record is coming from the physician end, we have to quote that. अभी इसमें इतना हमको कोड करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डायग्नोसिस है दैट वी नीड टू कोड, जो भी फिजिशियन ने लैब का ऑर्डर किया है दैट आल्सो वी हैव टू कोड। अभी उसके बाद अभी कोई लैब्स आके वर्क करने के बाद अगर किसी फिजिशियन इज आस्किंग टू डू एक्सरे, वो भी वी नीड टू कोड, then EKG, that we also need code. So medical coding is not just a thing limited to diagnostic coding. It also includes the procedures, also include the other factors also like X-ray, EKG, ultrasound, biopsies, or in between, if any physician is asked patient to undergo the surgery also, that we also have to code. ओके, सो अभी स्टार्टिंग में हमको मैम ने बताया था अभी जस्ट कि हमको सिर्फ डायग्नोस्टिक कोडिंग का ही पता है, और सर ने भी बताया था कि सीकेडी के लिए एक ही कोड है, बट नहीं, उसके लिए भी कोड है, पर उसके लिए कोड नहीं, प्रोसीजर्स के लिए भी कोड है, इक्विपमेंट्स तो यूज करते हैं उसके लिए भी कोड है, ठीक है। सो मेडिकल कोडिंग इज नॉट जस्ट ओनली लिमिटेड टू डायग्नोस्टिक कोडिंग। जो भी पेशेंट को होता है उसका वो डीएक्स तो कोड हमको करना ही है, नो पॉइंट इन दैट, बट वी हैव टू कोड अदर प्रोसीजर्स आल्सो। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, पेशेंट को हैंड कुछ कहाँ पे तो गिर गया, ही फॉल समवेयर एंड ही ब्रोक हिज हैंड, एंड फिजिशियन has discovered that the patient, he's done some ultrasound, he's done some x-ray of hand, and he found that there is a fracture, okay, and it should be reduced. So in that case, we will code the fracture code also, for the reduction code also, and he has also done the X-ray, so we'll code the X-ray also. So this everything is combined as a medical coding. You got my point, guys? Getting? Yes, सर एक चीज पूछना था, हम लोग ये कोडिंग कोड क्यों करते हैं सर? एक्चुअली डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। नो, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज व्हाइल इफ यू गिव lot if you code by hand, everybody's handwritten is different, there are no time for other to doctor to handle. You think about, हम भी जाते हैं कोई हॉस्पिटल में तो पेशेंट का इतना रश रहता है, so this thing is very, or physician has to give only 1 or 2 hours, other they have other duties also. So the better thing is, instead of writing this,
they have generated this numerical alphanumeric thing, which give a very easy way to avoid the complication of handwritten confusions and everything. मैं सी लिखता हूँ तो उसका ए भी हो सकता है. Okay. So to avoid this writing complications and to have a structured manner, they have given this alphanumerical form only for that reason. So because every diagnosis code has their its own RV value. अगर पेशेंट को कफ डायग्नोसिस हुआ है तो कफ के लिए आरवी वैल्यू डिफरेंट होता है और मैंने लाइकली आई हैव सेड लाइक इट इज द पर्पस इज ओनली टू गेट द पेमेंट फॉर द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल. फिजिशियन को जो वो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको प्रॉपरली पेमेंट होने के लिए ये सब एक्टिविटी करनी पड़ती है. फ्रॉडोलेंट जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस करने के लिए ये सब करना पड़ता है. ये तो हमारे ऐसे में यहाँ अगर तो किसी पेशेंट को अगर मल्टी डिसऑर्डर होगा, मल्टी हम्म डिजीज टाइप का, तो उसमें हम्म हम लोग कितना कोडिंग कर सकते हैं? उसका भी अलग डेफिनेटली. कोडिंग होगा? Yes. That's why I'm saying is I will come to that point also. But still now we'll stick to this slide only. Just like I said, diagnostic coding it's a one different part. Procedure coding it's one different part, and equipment coding is also different part. And we have a unique code set for all these codes, so it should not get interchanged. कफ के लिए different code है. Okay. उसके बाद क्रूपी कफ के लिए भी different code है. ओके यू गॉट माय पॉइंट. कफ के जो भी पार्ट्स है उसके लिए भी डिफरेंट कोड है. अस्थमा जस्ट टेक एन अस्थमा. अस्थमा एक्सर्बरेशन का भी डिफरेंट कोड है. ओके सीवियर अस्थमा उसका भी डिफरेंट कोड है. बट अस्थमा इज वन थिंग बट देयर आर लॉट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. So, and every time there is a particular different treatment, physician has to take different efforts for every diagnosis, every procedure. That's why it is very streamlined and it's very accurate. And the most thing is that it is updated every year. The US government is very strict on these policies, very much strict on its HIPAA compliance. That's why we are very much intense on this medical coding. Just हमको कुछ भी लेना है कोड करना है नहीं बॉस, this will not work. Okay, this will not gonna work. We have to read the report, we have to analyze the report, and we have to conclude what exactly. So what our medical coders role is, it we are as a mediator between the patient and the physician. Okay, physician or जो patient, physician you mean I mean to say doctors. Okay, you got my point. Physicians means the doctors and the facility means the hospitals. Okay, so and the coders are working for the insurances because with the help of coder, डॉक्टर को तो इतना टाइम होता नहीं है. वो क्या क्या देखेगा, वो सर्जरी देखेगा, पेशेंट देखेगा और फिर रात में ड्राफ्टिंग भी करते बैठेगा. दो दिस इज नॉट गुड वर्क. सो हियर इज द मेन पार्ट ऑफ अ मेडिकल कोडर. जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी फाइनल कंक्लूजन होता है, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड होता है, वो क्या करता है, वो फिजिशियन के पास से लेके कोड करता है. एंड दैट ओनली थिंग we need to share with the insurance company, and once the insurance company approves it, okay, then only the physician will get payment, then only the hospitals will get the payment. This is a very important point. If in the medical record the medical coder is reviewing the report very wrong way, okay, जो उसमें पेशेंट को है ही नहीं वो भी अगर उसने कोड कर दिया, ओके, तो पूरा उसका हिस्ट्री बदल जाता है. ऑलराइट. और अगर ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर इंश्योरेंस को पता चल गया तो इंश्योरेंस कंपनी फिजिशियन पे फाइन लगा देती है. एंड दैट फाइन इज इन अ वेरी मच हाई डॉलर वैल्यूज. So medical coding is not just a simple that we need to code. We have to give appropriate code for the diagnosis, appropriate code for the procedures, appropriate for code for the equipment. अभी ये जो equipment part that I have to discuss you, so it belongs to just like I can take an example. whenever you go into the hospital, so वहाँ पे जाने के बाद पेशेंट को कुछ डायरिया हो गया है, उसको सीवियर हाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो वो हॉस्पिटल क्या करता है, आईवी चढ़ा देता है, सब इंसुलिन, ये आईवी चढ़ाने के बाद सिरेंज चढ़ा देता है, सलाइन चढ़ा देता है, सिरेंज यूज करते हैं. वो जो भी सब उसमें आता है ना, दैट इज द इक्विपमेंट दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इन मेडिकल कोडिंग. So
whatever procedure is being given to the patient, everything we have to code into alphanumerical form. That is the medical coding. अभी आपको समझ में आ गया what is the medical coding? यस सर। Okay, so this is how it is. I will move to the next सर slide. अगर तो ये डेटा मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, मतलब उस पेशेंट का टोटली। डेटा मेंटेन हम नहीं कर रहे हैं, डेटा जनरेट हो गया है, वी आर एनालाइजिंग इट. ओके, मेडिकल रिकॉर्ड वी आर नॉट अगर प्रोड्यूसिंग इट. अगर अगर मान के चलिए, अगर वो डॉक्टर किसी पेशेंट के बारे में कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा गलत ट्रीटमेंट दे दिया और वो हम लोग को पता नहीं चला, तो हम वैसे में कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं कि वो डॉक्टर ने गलती कुछ ट्रीटमेंट में दिया है? That is the our role is. We have to develop yourselves. CPC examination is only for that reason. You should be have thorough knowledge of what is the diagnosis, what is the coding, what is the procedure. अभी देखो कोई पेशेंट को लैसरेशन हो गया है, लैसरेशन मीन्स कट हो गया है, और फिजिशियन ने बोला कि मैं सिर्फ अभी लैसरेशन कोड करने का क्राइटेरिया है कि आपको कुछ बैंडेज यूज करनी है, आपको कुछ सूचर्स यूज करने हैं. अगर मेडिकल रिकॉर्ड में फिजिशियन ऑलरेडी इज मेंशनिंग दैट आई हैव रिपेयर्ड द लैसरेशन, बट बंदे ने कुछ बोला ही नहीं है कि मैंने सूचर्स डाले हैं, 5 सूचर्स डाले हैं. लैसरेशन कोड करने के लिए वी हैव गाइडलाइंस दैट शुड बी, साइट शुड बी स्पेसिफाइड, सेंटीमीटर शुड बी स्पेसिफाइड. So that's we have to learn in the CPC. Okay, CPC का जो examination है, that proves that you know all the criteria, all the policies, all the what guidelines to code a particular diagnosis and to code a particular procedures. This that's why they have AAPC, AHIMA. They have introduced this accreditation: CCS, CC, CIC, COC, CPC. Why these are there? These are there only for that reason. जस्ट लाइक एन, देखो ना अभी अपना फार्मास्यूटिकल का कोई बंदा, आप ही फार्मास्यूटिकल करते रहेंगे, अगर आपको फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर डाल सकते हो? नो सर। नहीं, नहीं डाल सकते ना, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है. So this is the thing is, if you have a certification, it states that you are aware of all the things. You know the guidelines, when to be coded, when should not be coded. इस पार्ट में अगर फिजिशियन सिंपली कुछ भी ब्लंडर लिखता है, ओके, कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिव लिखता है, देयर इज द कोडर इज आल्सो दैट वन रिस्पांसिबिलिटी दैट वी शुड इन्फॉर्म टू द फिजिशियन कि बॉस ये आपने जो लिखा है इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. आप पूरा प्रोसीजर का डिटेल लिखो, तभी आपको पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज यू विल लूज द पेमेंट. ओके, सो दिस इज आवर रोल आल्सो कि जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर प्रॉपर्ली कोड करनी है, और उसको अगर उसमें कोड में कुछ भी लैगिंग है तो यू हैव टू इन्फॉर्म, यू हैव टू क्यूर इट टू द प्रोवाइडर, गेट द थिंग्स करेक्टेड, then only the physician will get the payment. Otherwise insurance will not at all entertain the physician. Itne bad scenarios that I have seen in my 10 years, just like the insurance companies are blacklisting the providers, blacklisted the hospitals. Why? They have given the fraudulent medical records. So you think about it. We are just not only working for the insurance, the medical coder will work for the physician also, medical coder will work for the hospital also, medical coder will work for the insurance also. क्योंकि इंश्योरेंस के पास भी मेडिकल कोडर होना चाहिए जो कि कोडेड हुए रिपोर्ट्स को खुद ऑडिट करेगा. यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। होप I could able to explain you things. So this is the RCM that I was talking about. You can see here that orange, this is the medical coding. So it is a part of RCM, revenue cycle management, and these cycles start from appointment scheduling to eligibility check, enrollment, and here the medical coding. इसके बाद भी पूरा rest of the chain is has to be happen. ओके, क्योंकि मेडिकल कोडिंग करने के बाद भी देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस दैट our इंश्योरेंस, our क्लेम शुड गेट रिजेक्टेड. सो इसके लिए भी हमको पूरा वो चेक करना पड़ता है, डिनायल्स है, पोस्टिंग है, ओके, ये सब हमको करना पड़ता है. इसके लिए मेडिकल कोडर का इट्स वेरी
big responsibility that he should know all the guidelines, he should know when to code, how to code, why to code. ये सब it is very important. अगर medical record में sometimes what happens, patient is coming with a cough and he is having a ear pain. Okay, so provider will examine the patient and he will give any antibiotic for his cough because he's having a sore throat. And for ear pain, he's something having some ear cerumen. Cerumen means आपके कान में जो रहता है ना ऐसा बल्कि. ओके, सो पेशेंट का जो इवेलुएट करते के टाइम फिजिशियन उसका कफ को भी ठीक करता है और उसका सिरुमन जो ईयर में है वो भी रिमूव करता है. सो कफ के लिए भी अदर कोड है और सिरुमन रिमूवल प्रोसीजर के भी अदर कोड है. अभी इस रिपोर्ट में इफ यू आर ओनली कोडिंग द डायग्नोसिस एंड वी आर मिसिंग टू कोड द सिरुमन रिमूवल प्रोसीजर, फिजिशियन विल नॉट गेट पेमेंट फॉर दैट वन. फिर फिजिशियन आके बोलेगा यार मैंने तो ये प्रोसीजर किया है, आपने मेरे को पेमेंट ही नहीं दिया. सो दैट थिंग इज हैपनिंग. So to avoid all the things, and one very most important part is revenue cycle management is it's very important for the physician as well as payer as well as provider point of view. अब ये क्यों है? क्योंकि अगर कोडर ने ही अगर प्रॉपरली बिल नहीं किया तो इंश्योरेंस जो कंपनी है दैट टेकिंग द मंथली जो प्रीमियम है वो पेशेंट के पॉकेट से ही जाएगा, राइट? And from that he only get the payment from that funds जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर को देगा. अगर पेशेंट का जो फंड है वो समथिंग $1,000 है, ओके, और उसका भी पेमेंट अगर फिजिशियन ने उसको एग्जामिन किया है और उसका $500 हो रहा है, सो दैट $500 वी विल डिड्यूस्ड फ्रॉम पेशेंट साइड क्योंकि वो उसका प्रीमियम भर रहा है. अगर उस ट्रीटमेंट में अगर हाई वैल्यू रहेगा तो दैट अदर थिंग्स विल बी देयर वर some governments interference there, medicare is there, they are have to involve and they have to give subsidies and everything, that is other part. But this coding is like goes in that way. It is very important for the patient, very important for the payer and very important for the provider. ज्यादा भी पेमेंट नहीं जाना चाहिए, कम भी पेमेंट नहीं जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. अभी ये जो हमने जो प्रोसेस अभी रीड किया है, सो हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स दैट विल बी सी दैट आई हैव शोन हियर. व्हाई वी नीड टू कोड द बिल? बिकॉज इट स्ट्रीमलाइंस द हेल्थ केयर बिलिंग. स्ट्रीमलाइंस इन दैट सेंस जो यूएस गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है इट लाइक दैट वे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पॉलिसीज है, सेक्शंस वाइज जो पॉलिसीज है, जस्ट लाइक हमारे इंडिया में एक डॉक्टर है वो ₹400 लेता है, दूसरे जगह पे जाओ तो ₹500 लेता है. ये जो डिफरेंस है ना वो वहां पे नहीं है. एवरी फिजिशियन हैज टू गेट अ पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर डायग्नोसिस. अगर लैसरेशन किया है, लैसरेशन का अगर $1,000 होगा तो यू गो एनीवेयर दैट विल बी द $1,000. इफ कफ है, कफ डायग्नोसिस है, उस पे उसने ट्रीटमेंट किया है तो कफ का डायग्नोसिस के लिए $5 होगा. सो यू गो एनीवेयर एनी डिस्ट्रिक्ट यू विल हैव टू पे ओनली $5. हमारे ऐसा नहीं है कि यार इसने 400 लिया तो उसके पास महंगा है, ये 200 ले रहा है, ये अच्छा है. नो 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 नो. सर इधर तो डॉक्टर के डिग्री के ऊपर फी होता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पे ऐसा इतना परफेक्ट होता है कि यू गो एनीवेयर हॉस्पिटल, एनी 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 डिस्पेंसरी यू कैन गो, एनी हॉस्पिटल यू गो, एनी फिजिशियन यू गो, जो सर्टन अमाउंट जो वो प्रोसीजर को है वही उनको मिलेगा irrespective of his qualification or irrespective of his degree. Got my point? यस सर. ओके, सो स्ट्रीमलाइन हेल्थ केयर बिलिंग कि सबको इंटेंट सबको प्रॉपर ही वो बिलिंग होना चाहिए, जितना किसी को कम भी नहीं किसी को भी ज्यादा भी नहीं. इंश्योरेंस करेक्ट करेक्ट रिइम्बर्समेंट कि अभी वो रिइम्बर्समेंट का भी इतना है कि वंस द पेशेंट इज विजिटेड टू द हॉस्पिटल उसका 30 डेज के अंडर उसका वो टाइम लाइन होता है, उसके अंडर ही हमको वो मेडिकल रिकॉर्ड उसका फॉर्म, उसको यूएसबी फॉर्म बोलते हैं, वो सबमिट होना चाहिए. उसके बाद ही उसको पेमेंट एक्टिविटी होगा. मीन्स फिजिशियन को डायरेक्टली पेमेंट नहीं मिलता है, जैसे हम हमारे हॉस्पिटल में गए कार्ड मार दिया उसको पेमेंट आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है.
वहां पे जो टाइम लाइन होता है कि अगर एक सिंपल सी भी विजिट होगी, सो यू विल नॉट गेट एट द एग्जैक्ट टाइम, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months। उसमें भी 2 to 3 months में अगर एक्यूरेटली वो एनालाइज हुआ तब ही उसको पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज दैट कोर्स विल अगेन गो इन डिनाइल पैकेट। Then again, the physician has to send the report. Again, that coder, medical coder has to review. So that's why medical coding, it's very carefully we have to handle this scenario. It's not that easy. Just like अभी हमने previously आपसे सुना था सर कि it's very no man, it is not like that easy. ये जितना simple है उतना difficult भी है. Okay. So support research and analysis. So and this how you said like आपने अभी बोला था कि क्यों ऐसा कोड किया है वैसा कोड किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्च एंड एनालिसिस पर्पसेस। Okay, if I am giving a curve R0.5, when at the time of research, I will only search the R0.5, उसके बाद में मेरे पास पूरा डेटा रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं हाथ से लिखता हूँ कर्व वगैरह तो मुझे एनालिसिस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डेटा मेडिकल कोडर जनरेट करते हैं कोड्स डाल के, उससे यूएस गवर्नमेंट को पता चलता है कि इन दिस ईयर these many patients was suffering with this diagnosis, these things were happened, this how treatment is done, and as per that analysis they do their all the researches। You got my point? And maintain compliance with regulations, it is very important to maintain the compliance। ये इतना important है कि इससे कोई भी fraudulent activity बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे कि I'll give an example, अगर कोई से किसी फिजिशियन के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ओके, एंड पर्टिकुलरली वही सिम्टम्स के साथ आते हैं और वही डायग्नोसिस करता है, तो वो क्या करेगा, वो जो उसके पास आने वाला जो डायग्नोसिस डिटेक्ट होता है वो जिसको नहीं है उसको भी डाल देगा और इंश्योरेंस को वो बिल पे करना पड़ेगा। So this is again violation. So that we also have to check. Hence, it is very important to maintain compliance with regulations। जो भी हमको अभी जैसे ना कोविड में इतनी सारी गाइडलाइंस थी, अगर वैसा अभी जस्ट टेल यू द एग्जांपल। अगर कोविड है, अगर किसी पेशेंट को स्क्रीनिंग तो आता ही है, स्क्रीनिंग को करने तो हम भी गए थे स्क्रीनिंग करने के लिए, पर स्क्रीनिंग करते समय अगर उसका स्वैब आया तब ही हमको कोड करना है, अगर स्वैब नहीं आया तो हमको कोड नहीं करना है। So this is again the regulation। This is, there are lots of guidelines are there and that a medical coder should follow। And then how the this cycle will run very easily to have a streamline to like reimbursement purpose to analysis and for the compliance। And how these things are happening with the help of this ICD, CPT, and HCPCS। Just like I said, the medical coding is not just diagnostic coding. It is a one part that is called as an international classification of disease। We have for one big book for this. Again, we have CPT, that is current procedure technology। Again, we have HICPIC, that we have said na equipment। So this all the equipments are here। They have all the different codes। syringe use किया है, कौन सा mm का syringe किया है, we have a different code। units use किया है, 1 unit use किया है, 2 units किया है, we have the code। सीपीटी प्रोसीजर में कौन सा प्रोसीजर किया है, आईएनडी किया है क्या, लैसरेशन किया है क्या, सर्जरी किया है क्या, अपेंडिसाइटिस किया है क्या, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इज इन 3 books। आई विल शो यू द पिक्चर। दिस इज हाउ द बुक्स लुक्स लाइक। सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस। I will tell you that thing. CPC cracking CPC is very easy because it's an open book. So don't worry that I have to mug up and all things. No, no, no। While attempting the exam, you have to take all 3 books with you। Okay। और ये से हमको जैसे हम एग्जाम में शायद कोई लेके नहीं गया रहेगा, बट इन सीपीसी एग्जाम में हमको पूरा वो एपीसी अलाउ करता है कि आप अपने बुक्स खुद के साथ ले जाओ, उसको रेफर करो, उसके बाद ही हॉल में एंट्रेंस सर है। एग्जाम में बुक रेफर करना अलाउ है? Yes, that's what I'm saying। Hence, it's cracking CPC is very easy, very easy। तो मतलब क्या हुआ एग्जाम का? भाई आप मेरे को बताओ, ये आपको ये जो पेज है ना, ये 3400 पेज है। एंड ये जो आप बोल रहे हो ना ICD-CM, ये जो बुक है, इसमें एवरी कोड इंक्लूड है, एवरी डायग्नोसिस इंक्लूड है, फ्रॉम योर सिम्टम्स
क्रॉनिक इंजुरीज, मल्टीपल इंजुरीज, उसके बाद इंजुरी का इंसिडेंस जो हुआ है वो भी इस बुक में आता है। मीन्स आप इसमें जो भी डिसीजेस आपको होंगे, जो भी होंगे, वो सब उसमें डॉक्यूमेंटेड है, सिम्टम्स से लेके क्रॉनिक कंडीशंस तक। इवन फ्रैक्चर्स के रिलेटेड भी सब कोड इसमें डॉक्यूमेंटेड है। और नॉट ओनली द फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर किसके वजह से हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, वो भी कोड कोड करना पड़ता है। कहाँ पे हुआ है, रोड पे हुआ है क्या, ये घर पे हुआ है, वो भी हमको कोड करना पड़ता है। स्टेटस कोड बोलते हैं उसको, कि और कोई पेशेंट को सीकेडी है और वो डायलिसिस पे है, तो डायलिसिस का भी कोड हमको देना पड़ता है। दिस ऑल कोड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ अ पेशेंट इंस्टेड ऑफ सर राइट। एक क्वेश्चन, जैसे अगर कोई कोडर से कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गए, हम्म तो उसके वजह से क्या कंपनी कुछ उस हम्म पे पेनल्टी वगैरह भी डालती है क्या? See that part you don't need to consider about at this level. वो सब आगे की बात है। Then that senior persons will manages all the things. You don't worry about that. वो सब होता है। That again it depends on the agreement level. Okay. वो जो SLA जो होता है, वो client side level agreement जो होता है, तो वो सब उसके अंडर वो मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। ओके, कि अगर इतना हुआ तो दैट्स व्हाई इट इज क्वालिटी इज अ मेजर। क्योंकि कंपनी में 95% क्वालिटी का बेंचमार्क होता है, किस कंपनी में 98% का क्वालिटी का बेंचमार्क है। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट वेदर they are going to penalize that, you are going to sue that, all depends on that rest higher level management. You should not go in that way। वहाँ पे जो रहता है वो सब पॉलिसीज में रहता है, हमको वो अभी ध्यान में नहीं देना है, पर वो होता है, पर वी लेट्स डोंट गेट बॉदर अबाउट इट। इससे कोड ऑफ कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज यू आर ह्यूमन बींग्स यार, वी आर नॉट मशीन और समथिंग लाइक दैट। ह्यूमन मेक्स मिस्टेक, करेक्ट? यस सर। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड क्लाइंट को भी मालूम रहता है कि देर इज नो 100% एंड एनीवन कैन गिव। So that's why they have said that we need at least a 95% accuracy. अगर 100 रिपोर्ट में 5 रिपोर्ट गलत हुए, they will manage. No, don't worry, don't go with that. बट अगर 100 रिपोर्ट में 95 रिपोर्ट्स में गलती है, बॉस तो ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। So to avoid these errors, to avoid these things, they have given us a CPT, ICD and HICPIC. अभी हम जब काम करने जाएंगे ऑन द फ्लोर, we are also having a good software with that. इसके सॉफ्टवेयर के सिवा हम वहाँ पे काम भी नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एनकोडर प्रो है, कोडिफाई है, हमको डे टू डे लाइफ में इसको यूज करना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम कोड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कोड। जस्ट लाइक आई गिव एन एग्जांपल, कि अगर जैसे बाइबल है, जैसे हिंदू ग्रंथ है, कि जहाँ पे सब सब डेटा जमा करा है, सेम हियर, HICPICS, ICD and CPT are all these books. While coding we have to use that. To get the CPT certification, we have to use that also. Hope my point is clear to you guys. Is यस it? सर। Yes, sir. Is it anybody is having any question? I can only see these people are speaking, interacting. What about others? Sleeping or what? No? Early morning, right? And still it is a Sunday. Correct? Guys? Okay. Shall I move ahead then? Yes, sir. Okay. Thank you. So this is overview of an ICD. That's why I was discussing use of diagnostic coding. This is the how alphanumeric structure is. This code is E11.9. It is for diabetes. You can't keep writing a diabetes. Just give a code E11.9. The coder will, the physician will, and the insurance company will understand what the patient is having exact condition. And this classification of diseases includes, that's actually external cause code. इंजरी हुए, किसके वजह से हुए, कहाँ पे हुए, क्या रीजन से हुए, सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है। किसी ने ड्रग का ओवरडोज किया है तो सुसाइडल अटेम्प्ट है क्या, उसका भी कोड है। एडवर्स इफेक्ट हो क्या, उसका भी कोड है। एवरीथिंग इज इट compressed in this ICD-CM book. Okay, again this CPT code, that's what I was discussing। इस CPT कोड में जो भी स्मॉल से स्मॉल प्रोसीजर होगा, वो सब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड। Take it note, man. Every from your nail to your hair, नेल पे जो भी प्रोसीजर होगा वो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। हेयर के ऊपर जो भी प्रोसीजर होगा वो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। अब
एवरीथिंग, किसी को अपेंडिसाइटिस हुआ है, अपेंडेक्टमी करना है वो भी है, स्पाइन सर्जरी है वो भी है, सब उस पे सीपीटी में इस बुक में कवर किया जाता है। और इसके बाद सर्जरी इंक्लूडिंग ऑल्सो द एनेस्थीसिया ऑल्सो हम इस बुक में कवर किया जाता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इज बंदा इज गोइंग अंडर सर्जरी, सो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, दैट एनेस्थीसिया कोड ऑल्सो वी हैव टू गिव। सो दिस इज हाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट। सो नो समटाइम्स आई फील लाइक यार, इतना मैं पढ़ता तो मैं भी डॉक्टर हो जाता था, राइट? करेक्ट Yes, गाइस? sir. Yeah, Right. exactly. Medical coding is the same field also, same thing also. But you are not getting a degree or something, but you have to keep yourself up that much up to date. Sometimes I have seen the scenarios when the coder was explaining to the physician, sir, you have done this procedure wrong. See how it is. How this coding field is very, very, very interesting. अगर वो बोलता था, सर आपने ऐसा नहीं किया, मैं प्रोसेस नहीं करूंगा, यू थिंक अबाउट इट। So this is very interesting, but you have to keep learning always. You have to keep updating yourself, and though it is very interesting field, if you have very much knowledge in that, you keep your updated. I tell you guys, other than medical field, there is nothing. Means it's all it depends on their perception. But as we are science background, this is very good. Meanwhile, we will be there are may chance we'll get a work from home also, depending on the scenarios, depending on conditions. Okay, so this is how CPT code also. CPT book covers everything. This is a HIPIC code. That's whatever the instrument used by the physician, syringe use किया है, scalpel use किया है, bandages use किए हैं, क्या क्या जो भी material use किया है physician ने, because everything has some its own value, right? Physician ऐसे फुकट में तो नहीं करेगा, वो अगर उसका खुद का मटेरियल यूज करता है तो वो उसका तो चार्जेस लेगा ही ना। सो दैट इज इट। देखो, यानी आई हैव पुट एन एग्जांपल, एम्बुलेंस सर्विसेज, अगर कोई बंदे को इमरजेंसी में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाए तो A0428 ये कोड हमको करना पड़ता है, दैट द insurance will get notified that the patient is have not arrived himself, it is being brought by the ambulance and ambulance charges has to be paid. Got it? Yes, sir. So that's why it is very important. Instead of running all this thing, once we put this code into our software, easily the software captures the things, and as per that capturing, they will start the reimbursements. So how this coding procedure is done? So being as a medical coder, our first important thing is we have to read the medical documentation carefully from top to ground. We have to read whatever the information provided that here given, that we have to see, identify the procedure code, enter the code into medical billing software, and submit the claim to the insurance provider. This is our day-to-day life scenario, and this how we are doing it. Compliance and ethics. See, it is why it is has been compliance, because as you know that these US peoples are very sensitive. Okay, they really don't want to discuss their own any information to others. That's why if you ask to any people share my number, हम बोल देते यार ले ले चल कुछ नहीं था, but they are very sensitive, they will not share your any small thing. That's why this compliance and ethics has come in picture. The HIPAA regulation. This HIPAA regulation, a medical coder should know properly. The patient's information should not be leak to other patient. अगर किसी पेशेंट को HIV है, so that thing has to be kept confidential to himself only, and that confidentiality it is between the physician and the patient. It should not be and the family members, not other than that. So इसमें सब आता है, फैमिली हिस्ट्री का भी रेगुलेशंस है। उसके बाद पेशेंट अभी किसी को मॉर्फिन ट्रीटमेंट चलता है, किसी को अल्कोहल ट्रीटमेंट चलता है, दैट थिंग हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल। दैट्स व्हाई HIPAA regulation is very important. Whenever you code, whenever you go in any company, you will allow they will stringently make you to go with HIPAA regulation. That's why in few companies we are not allowed to carry our mobile phones also. Why?
because this things this confidentiality should not be shared to anybody. If it is caught, if this fraudulent activity is caught, then the company will take the action against you. I have seen the peoples, they have carried the mobile tape, even if they have not captured anything, but they have been still restricted because it's a hiccup compliance and it's all being monitored by the US government. Avoid fraudulent coding, that's why I said upper coding एंड अनबंडलिंग, कि जैसे कि अब कोडिंग होता है कि पेशेंट को कफी होता है, फीवर होता है, पर उसको अस्थमा कोड कर देते हैं। अरे भाई कफी है, फीवर ही है, तो अस्थमा कोड क्यों कर रहा है? अस्थमा इज अ कॉर्निक कंडीशन, कफ के लिए $5 है, फीवर के लिए $5 है, अस्थमा को $1000 है। तो दिस इज कॉल्ड एन अप कोडिंग, अनबंडलिंग। ये जो जिसके साथ जो कोड करना चाहिए वो सीपीटी के साथ वो कोड करता नहीं है, तो वन हाफ ऑफ द सीपीटी पेमेंट इज डन बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट डन. So this is unbundling and conduct internal audits for the accuracy. It is very important that every report has to be, वैसे भी यार सब हम लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं। अगर फिजिशियन इतना मेहनत एफर्ट्स लेता है और उसको पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो क्या यूज है फिर उसका? दैट्स व्हाई everyone should get payment, hospital should get payment accurately, physician should get payment accurately, and the patient also gets satisfied. That's why it is very important to go under the compliance and the ethics. Now here we are very interested how I will grow up in my life with this medical coding. See guys, I give you an example of myself. Before joining the medical field, as I told you that I was a BTech biotechnology graduate and I'm really struggling to get the R&D kind of thing, but I couldn't get, and I was get an opportunity, but the payment was really less, very less. Then I came to know with my friend, my colleague, my very good friend of mine, and I started the career right now, and I am very much settled currently. And the thing is, in this medical coding, there are lots of chances. You cannot be just a coder. आप आपके दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए यार, मैं क्या लाइफ टाइम कोड ही कर कोडर ही बनूंगा? नो. If you adapt the skills, you have accurate knowledge, you can live up to medical coder. So you can be a auditor, you can be a billing specialist, you can be a team lead, you can be a manager. That's how the ladder is goes up. But to have a great future in this medical field, the certification is very important. Just like I said, अगर आपके पास फार्मेसी का डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप लाइसेंस नहीं, आप फार्मेसी चालू नहीं कर सकते. दैट्स हाउ द सीपीसी, सीसीएस एंड सीआरसीस and lots of credentials out there. That is very important. This works as a license to enter you into the medical coding field. If you have the license, even the companies are using this CPC identification number, because if to get the client, the front end company need to show them I have this much of CPC certified coders with me. Then client believes that यार ये CPC बंदे इसके पास है, definitely उनको इतना knowledge होगा, चलो इनको प्रोजेक्ट देते हैं. This is how it is works. So my thing is like, if you want to come to in this medical coding, at least you should have a CPC certification. If you enter as a fresher, no worries, no point in that, you are always welcome, but you will get less payment. But if you have a CPC, definitely you will start earning package starting from 4 lakhs to 5 lakhs. This is how the current market is going, and based upon your experiences, that will the added advantages. Job lookings high demand with remote opportunities, like everything. I can just like you said, if you have CPC certification, you can work in India. If you get have good luck, you can work in Qatar, you can work in Kuwait. If you are having still having good luck, then you can work for directly for the physician also. You can go into US, you can go into Australia, you can go anywhere the ICD, CPT and SCC pick this coding are covered, guidelines are followed. Getting my point? Yes, I sir. Yes, sir. hope I have cleared your doubt in that. If anybody has it, just ping me there. Now see he did. Just like I given you the one slide, and this is the slide. What exactly and why medical coder? This is the specification. Medical coding, it's a very big circle. In that it includes, you can be a ED coder, you can be an ENM coder, you can be a surgery coder, you can be a IPDRG coder, you can be an ancillary coder, you can be a radiology coder, you can be a pathology, you can be a anesthesia, you can be a HCC.
So this is a specification of domains, and I tell you, everybody is can earning beyond 50 to 70,000 per month. In that particularly, I am highlighting you ED, surgery, epidemiology. These are booming. But to entering in this, you should have some fundamentals, right? You should have some basic knowledge, and that basic knowledge you can get it from the CPC. सर So मैंने सुना है आफ्टर कंप्लीटिंग द सीपीसी हम लोग को स्टार्टिंग फ्रेशर्स को 20 to 25 से स्टार्ट ही करते हैं. it's again it depends on the organization policy. किसका बजट क्या होता है, किसी का बजट क्या कम होता है, ज्यादा होता है. But I will tell you, CPC will allow you to enter into the market instead of struggling. See, I have seen the people in Chennai who are non-certified. They are working only 10,000 also. Same work, same payroll, same login logout time, same report, same physician, same procedures. But payment is less. But the person is having a CPC, is definitely gets and कितना महीना आप काम करोगे वहाँ पे, देखो 6 महीना निकाल सकते हो. But as you add the your experience, definitely your packages booms. You get more exposures. It becomes very handy. You get an experience of real life working. You come to know other procedures also. But we have to start with this basic things. So that's why it is very important. So don't think about that you will get 25. But if you think like that, यहाँ पे भी 25 मिलता है, वहाँ पे 25 मिलता है. But you see all the other things. If you get the certification, you being a master in surgery. I have seen the surgery people are getting 70 to 80,000 per month. IPDRJ are people getting 1.2 per month. Ancillary people are getting 70,000 per month. Radiology coder. You know that. इसमें भी ये स्पेसिफिक कोडर होते हैं ना, ये रेडियोलॉजी सर्जरी वगैरह में, जैसे आपने कहा. हाँ, उसमें भी होता है ना कि जैसे अभी ENM है. ओके, ENM क्या होता है? इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट. ये एक स्पेसिफिकेशन होता है. जस्ट लाइक कि पेशेंट अगे जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हमको वो डायरेक्टली एडमिट नहीं करते. ओके, हमको डायरेक्टली एडमिट नहीं करते. हमको वो ED में इमरजेंसी रूम में बिठाते हैं. वहाँ पे अपना वाइटल चेक होता है, वहाँ का फिजिशियन हमको चेक करता है. अगर उसको लगा कि भाई इसको कुछ एडमिट करने की जरूरत नहीं है, दे विल सेंड यू बैक. Otherwise, from AD, they will shift you into IP, inpatient. और inpatient के बाद हमारा ये सब सर्जरी कोडिंग स्टार्ट होता है. रेडियोलॉजी स्टार्ट होता है. एंसिलरी में सब अपने लैब्स कोड होते हैं. रेडियोलॉजी में सब अपने अल्ट्रासाउंड कोड होता है, यूएस कोड होता है, ENM इकीजी कोड होता है. पैथोलॉजी में सब अपने बायोप्सिस जो होते हैं वो कोड होते हैं, कैथ कोड होते हैं. एनेस्थीसिया मैंने जैसे आपको बताया कि किसी पेशेंट को मेजर सर्जरी है, वो कोड करना पड़ता है HCC में. ये सब HCC इट्स आल्सो HCC पीपल्स आर आल्सो इट्स जस्ट ICD कोडिंग, बट पीपल आर कोडिंग मोर देन 60,000. ये क्रोनिक कंडीशन कोड करनी होती है उसमें. दैट्स इट. इफ यू हैव नॉलेज ऑफ ओनली ICD कोड, you will easily get the more good package in that. But you should now have the knowledge of ICD at least. Okay. सर ड्यूरेशन क्या होता है कोर्स का, मतलब कौन सा? ड्यूरेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस कोर्स डिफरेंट और सेम? No. CPC. See, this is other specifications. Okay. ओके. Once you enter into medical coding, okay, they will put you हाँ. in these specifications. आपको हाँ. ED कोड करना होगा, सर्जरी कोड करने का डालेंगे, एंसिलरी कोड करने के डालेंगे, रेडियोलॉजी कोड करने के लिए डालेंगे. ओके. बट अगर रेडियोलॉजी कोड करने के डालेंगे, बट सॉरी, इज एनीबॉडी? ये कैसे डिसाइड होगा सर कि मुझे ईडी मिलेगा या सर्जरी मिलेगा या रेडियोलॉजी मिलेगा? हाँ, इसके ये लिए जो भी है कुछ ना, अलग करना पड़ता है क्या सर्टिफिकेशन? no, that is what I'm saying. कि ED, सर्जरी, एंसिलरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, HCG, इन सब कोड में जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो सब CPC क्लासेस में दिए जाते हैं. जैसे कि हमने देखा सर्जरी है, तो वो CPD जो अपना बुक है ना, ओके, CPT के बुक में सब सर्जरी कोडिंग का नॉलेज रहता है. गॉट इट? और सर्जरी के साथ हमको ICD भी कोड करना है, तो ICD 10 cm जो बुक है उसमें हमको वो नॉलेज मिलता है. समझो आप? रेडियोलॉजी कोड है ना, रेडियोलॉजी कोड करने के लिए भी जो कोड सीरीज रहता है,
अभी ये सब सीरीज है 1000 सीरीज 2000 सीरीज 3000 सीरीज, ये सब सीपीटी के बुक में आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा। दैट इज वाई सीपीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सीपीसी सर्टिफिकेशन है तो you are assume that no you are definitely क्या बोलते हैं उसको, आपको ऐसे कंसिडर करेंगे that you know all these things, you know how to code surgery, you know code ancillary, you know how to code radiology, because उस कोर्स में है सब सिखाई सिखाई देते ही है। Got my point? Yes, sir. That's why Sir. to get the certification is very important. Okay, shall I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. See, this is the ladder, you can say, a very like path. As a senior medical coder, you will move as a senior medical coder, then you quality analyst, you can be a team lead, you can be deputy manager, you can be manager, you can be a senior manager. So you can't restrict yourself. जैसे जितना आप efforts लोगे, it's everywhere, but in coding field you won't be stuck yourself in coding full time. Okay. You always keep moving. जैसे मैंने भी मीडिया कोडर से स्टार्ट किया था. Now I am being a team lead. Now I get an opportunity to manage the team. But it just depends on all your efforts how you will take. So you will won't stuck in between. You will keep moving. But you have to keep learning and updating yourself with all the credentials. Alright, guys? Sir, what is the duration actually, sir, for CPC courses? The duration, this our academy person will tell you exactly how much time it will take. Okay. We do after 12, sir. No, I don't have that update, but they will. You can query with them. They will definitely tell you all the things, duration, fees, and everything in time, and also. All right. Okay. So see, people were saying like, to where we could get the job. See, man, these are all companies are waiting, and they are hiring CPC certified coders. All companies, Coro Health, then Access Healthcare, then Omega, Sai System. Every company, they are Optum, R1, Atos, all people are requiring CPD certificate candidates. So definitely you will get job anywhere, anytime. Gabs International. My God, these are very good bucket I can see in front of Is you. there any scope in after completing CPC in the government sector? To you want to say in India? Yes, sir. No, man, no, definitely not. How you can say they are, should not be discussed this all the things, but you just tell me, इंश्योरेंस में अभी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आप देखो कि हाउ मच एंड हाउ दे treating us, what are the activities are going, these are very Yes, streamlined. sir. ओके, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि अगर गफ को $5 ही है तो you can't accept exit that exit your dollar values. आपको $5 ही मिलेगा. अगर कोई फिजिशियन उसको $10 मांगता है तो डेफिनेटली ही विल बी सू. यू गेट माई पॉइंट. अभी जैसे जैसे देखो ना यार, आप हम अगर किसी भी हॉस्पिटल में गए ना और जाने के बाद अगर कैशलेस होगा तो बिल कितना आता है, और हम कैश पेमेंट करेंगे तो बिल कितना आता है? आता है ना? Yes, sir. अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा निगोशिएशन हम करते हैं कि यार इतना 5,000 आया तो 2,000 तो दे दे, पर वहाँ पे नहीं, अगर वहाँ पे बिल 10,000 है तो 10,000 ही होगा. So in government, I don't think so in future. Even our system is building that way. They will not adopt this thing. I don't want to use that word, but I think you got my point. Yes, sir. Intentionally or non-intentionally, they will not going to adopt. If it adopt, then don't worry. We will be the most luckiest person in on the earth if Indian government is adopting this medical coding.
RCM rule, ICD, if they start following, then we'll be सर definitely. बट यूएस गवर्नमेंट वगैरह जो अदर कंट्रीज में है वो तो अडॉप्ट कर चुके हैं इस चीज को. Yes, मैं बोल रहा हूँ ना, if you have a CPC certification, you can with that credential, you can work with Africa, South Africa, you can work with Saudi, you can work with Kuwait. Even they want a CPC certification candidate. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट मेडिकल कोडिंग में वर्क फ्रॉम होम होता है क्या? सी वहाँ पे एक्चुअली पैंडेमिक सिचुएशन था ना. ओके, सो दैट टाइम यूएस गवर्नमेंट, यूएस में lots of pressure was there because lots of patients was there were. सो वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आएंगे उसके रिपोर्ट कोड करने थे, उनको पे आउट करना था. तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे यहाँ पे इंडिया में भी वर्क फ्रॉम होम दिया गया था कि दैट दैट प्रोसेस शुड नॉट बी गेट डिस्टर्ब. अगर हमको भी अगर छुट्टी मिलती थी तो तब वहाँ पे इसके बंच ऑफ. बाद होंगे नहीं? नहीं, अभी ऐसा कि अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी. आई हैव सीन द पीपल्स लाइक आईपीडीजे सर्जरी, देयर फ्यू कंपनीज आर स्टिल दे गिविंग देम वर्क फ्रॉम होम. They are allowing the candidate to work from home. ओके. Hmm. Okay. But there are, I'm denying, but again, you can take a 50-50 probability. All right, guys. यस. So you can keep a handy this website if you want to really learn something from AAPC, AHIMA. Okay, these are the online sources. Okay, then, guys, I hope I could able to justify you the importance of this coding field for the new horizon instead of doing this traditional working out PV and all those things, medical representing all of this. If you opt this, definitely you will have some bread and butter and at your morning every सर day. एक्चुअली सर एक चीज पूछना था सर. रियलिटी आप सर तो जॉब कर ही रहे हैं इसमें. Hmm, 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 hmm. आफ्टर सर आफ्टर सीपीसी सर्टिफिकेशन सर रियलिटी बताइएगा. सर क्या मतलब पैकेजेस स्टार्टिंग होते हैं? और सच में जितना भी आपने बताया जैसे कि हम लोग मतलब ये एग्जामिनेशन वगैरह भी इतना इजी होते हैं सर. Hmm, तो hmm, hmm. इसमें हम लोग एक सर आप तो किए होंगे, आपके ड्यूरेशन क्या था सर सीपीसी का सर्टिफिकेशन का? देखो क्या होता है ना कि आई वॉज लॉन्ग बैक इन 2014 when I joined a company called as an Gaps Healthcare. Okay, there is in Mumbai. You might have heard that company name. Still, it is existing and still it's in very the topmost thing. So that time when I joined Gaps Healthcare, so they was having itself they were having this CPC certification with bonds. So अभी भी ऐसी कंपनीज है, ओके, जो रिक्रूट करती है, सीपीसी सर्टिफिकेशन भी करवाती है, और उसमें बॉन्ड रहता है कि आपको 2 साल या 3 साल कंपनी के पास स्टिक रहना पड़ता है. इन दैट पीरियड दे विल पे यू एज मिनिमम एज दे कैन. ओके. ओके. हाँ, तो इट्स डिपेंड ऑन एंड अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन अबर टाइम फ्रेम पूछोगे तो दे हैव टू यूटिलाइज यू ऑल्सो. ठीक है, अगर आप 8 आवर्स उसके साथ बॉन्ड हो डेली, आपको वेक्स चाहिए तो आपका पेमेंट होना चाहिए, तो सो यू हैव टू वर्क 8 आवर्स विद देम एंड देन अगेन फॉर द दिस क्लासेस यू हैव टू एक्सटेंड 2 hours to get the classes. Okay, that's what the scenario for when I was in that 2014 or 13, something like that. But now to get the awareness country, and there are lots of resources are available, the company has stopped to providing educating the persons for the CPC. They are mostly hiring the persons which are already done their CPC from other sources like that. And internally, once you get, they will give you a chance to qualify for the further other certifications. They will allow you to go for if CCS is there, CIS is there. As in the continuous learning assessment, they will help you. For North, for Chennai locations, really this there are few companies, they are really doing this thing that they will hire you as a fresher, but around only 10 to 12,000 they will provide you, and they will say that okay, we will get you certified, and then only I will raise your salary.
So this is how it is. जब तो आपका सीपीसी सर्टिफिकेशन होगा तो आपको 10-12 में ही काम करना पड़ेगा। और जैसे ही अगर आपका एक बार हो गया तो? फिर वो उसका जो भी पॉलिसी होगा 20% 30% वो आपको हाइक दे देंगे। इट्स और डिपेंड्स स्टार्टिंग ही ऑन अगर हम करते हैं तो सर कितना अगर मिलता है? I think you definitely start with 30 and above as in CPC certified coder. सर अगर सीपीसी करना है और कंप्लीट मतलब तो आप क्या रिकमेंड करोगे कहाँ पर सीपीसी सर्टिफिकेट कहाँ पर मिल सकता है जल्द से जल्द? नहीं सर, ये कैसा है, अभी मैंने आपको ये बताया ना कि देखो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो ये स्पेसिफिकेशंस जो है, आपको ईडी भी सीखना है, सर्जरी भी सीखना है, एनसीडी भी सीखना है, रेडियोलॉजी भी सीखना है, ओके, पैथोलॉजी भी सीखना है। तो ये सब जो है ना सर, ये जो बुक्स है, ये हमको थोरली पढ़नी पड़ती है। ओके, हमको दैट विल कोर्सेज में आपको हैंडी कर दिया जाएगा कि कैसे के ऊपर रीड करना है, कैसे सीपीडी फाइंड करना है, कैसे आईसीडी फाइंड करना है, कब कोड कहाँ पे देना है। So that everything will be covered in that session also, and it will not take much time, hardly ये 50 to कोर्स 10. हेलो सॉरी तो हाँ। सर अगर ये हम सीख रहे हैं अभी बी फार्मा के स्टूडेंट है हम तो उसके हम्म। बाद में कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली आप कर हाँ सकते हो ना, इट इज अ वेरी वेरी गुड चांस टू यू गाइस टू इंस्टेड ऑफ रनिंग हियर एंड देयर, इफ यू हैव दिस नॉलेज। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई हाँ फर्क तो सर, क्या फर्क होता है ऑनलाइन कोर्स करने में ऑफलाइन में? अभी आप ही देखो यार, स्कूल के सामने मास्टर रहता है, टीचर हाँ रहते हाँ हैं, हाँ। और घर में बैठ के कोई सोता रहता है, कोई टीवी बकता रहता है। आप ही हम्म। बताओ कितना फर्क होगा। फर्क तो है। हाँ सर। हम्म। Sir, which is बट the best time to mm, join the coding classes? which is the best, it depends on your convenience. What you are doing I'm exactly now? actually I'm studying in B Farm third year. So Third what you year. recommended when I start that? See, I have seen the companies also who are taking the freshers as well. Okay, for their initial days. If you have that CP certification, it will be again help you to build your strong resume. Okay, okay. Okay, and if really company needs, they can hire you also. Apart from that, your degree and all, if they really needs. Okay, sir. Any other question, guys? सर लाइक मैंने मेडिकल कोडिंग कोर्स किया हुआ है और मेरा बी फार्म Hmm. लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मतलब अभी मैं Hmm. ग्रेजुएट हो ही जाऊंगी 2 मंथ्स Hmm. के बाद में। Hmm. तो अभी Hmm. मतलब मैं एज अ फ्रेशर मेडिकल कोडिंग में एंट्री करना चाहती हूँ, ठीक है। Hmm. बट Hmm. मतलब जैसे मैंने कुछ कंपनीज में अपना रिज्यूम भी किया था, इंटरव्यू के लिए भी किया था मैंने। Hmm. तो Hmm. मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि उनको मतलब सीपीसी चाहिए भी और नहीं भी, अगर मैं एज अ फ्रेशर भी वहां पे ज्वाइन करना चाहती हूँ तो वो ले लेंगे, बट Hmm. सीपीसी मेरे को फर्दर देना ही पड़ेगा, मतलब लाइक 1-2 मंथ के नहीं, कैसे बाद देना में। पड़ेगा? आप अगर आपको सीपीसी कोर्स इज डिफरेंट एंड गेटिंग अ सीपीसी सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट। ओके। सीपीसी एग्जाम ही मतलब देना पड़ेगा फिर मेरे को। हाँ, सीपीसी एग्जाम देने के बाद ही आपको सीपीसी सर्टिफाइड आप होगे ना। हाँ, तो सर मैं ओके। वही बोल रही हूँ कि मतलब अगर हम्म। मैं अभी एज अ फ्रेशर भी स्टार्ट करना चाहती हूँ विदाउट हम्म। सीपीसी भी, तो हम्म। मतलब मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते क्योंकि हो। आप कर सकते हो। सर जो नेशनली और इंटरनेशनली मतलब सीपीसी से हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें यस, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है सीपीसी से। डेफिनेटली मिलती है। यू आर ऑल ओपन फॉर द ग्लोबल मार्केट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग it is not just to get this APCCP certification. It's not simple. It is very very having a huge demand, like your SAS, SAS. It is expert all over the globe. This is the same thing. AAPC. They are introducing whatever the credential they are introducing. CCS, CPC, CIC. It's all everywhere accepted. But thing is, we should have the knowledge and we should have the guidance. ओके Okay. सर। Hmm.
सर एक्चुअली हम लोग को सब चीज क्लियर हो गया है, बट एक चीज अभी भी सबको हमको लगता है सर, डाउट है कि हम लोग करना कहाँ से चाहिए और सर ड्यूरेशन क्या होगा। तो करना और कहाँ से चाहिए, that I will recommend you. Global Pharma Academy is also providing you this certification. So again, you check if you think it is very good, because we have some very trained industrial experts. They who have really lived this the coding. They knows all the CPT guidelines, CPC in day-to-day life, and they all knows how to crack the examination in easy format. Okay. ओके सर। Because see, the CPC exam, it's very easy to crack. I'll tell you. Once you enroll into this, there are lots of easiest things we will teach you instead of going to reading all this one by one page. Definitely, we'll show you most easiest way how to go onto the quiz, because only 5 hours examination is there, and in 5 hours examination we have to solve around 100 questions. Enough time you will get with the tactics. We'll cover you that way. सर वो ग्लोबल फार्मा ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है? हाँ, आप एक बार अपने Hello. academy, is there any person from academy? Hello? Yes, yes. I will. Ma'am, can you I'm guide? Snehal. Hello. I'm Yeah, yeah. audible to all. Yes. Yes, So, ma'am. I'm Snehal, a student coordinator of Global Pharma Academy. Here, now I will just share you the information regarding our courses. So, sir, did you completed your session or can I Yeah, start? yeah, sure. Please, please. Sorry, I take your lots of So, time. Almost I am 30 minutes sharing ago. my screen. So, I will present you our academy information. Okay, just let me know my visible to everyone. Okay, wait a minute. Yeah, so my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, ma'am. So all of you, as you know that this free webinar class on CPC medical coding, which is organized by the Global Pharma Academy Pune. Okay. So moving to the next slide. Global Pharma Academy Pune. So we are Global Pharma Academy, which is the ISO and MSA certified national level institute in pharmaceutical and healthcare sciences, established with a proclaimed objective of becoming a center of excellence to guide the students for building their career in pharma sector. So we offer 3-month online certification program in CPC medical code. Okay. So here I welcome the founder of Global Pharma Academy, Amit Kumar Mane sir. Education, he completed the M Pharmacy and MBA. He is the master trainer for clinical research, regulatory affairs, and pharmacovigilance in LSSDC. And he is the owner of Malan Medical and Distributor Pune since 2013. He is the trainer for retail and wholesale pharmacy business management also. And he is the host of one YouTube channel. Channel name is Things by Amit. We have 1 lakh plus subscribers on our YouTube. Okay, so to know the all update regarding our courses we providing, interview preparation, career guidance, you can subscribe our channel. Name is Things by Amit. Moving to the next slide. Here I welcome the HR of Global Pharma Academy. She completed the Bachelor's of Pharmacy and having responsibility of like our organization, job assistance provides knowledge regarding interviews and soft skill development classes. So this is the email ID globalpharmaacademy@gmail.com, and this is her contact number 7499252772. If you have any questions related to the placement, job assistance, skill development classes, you can connect with her anytime. So here, this is me, a business development executive of Global Pharma Academy. My name is Nehal, and I have completed my Bachelor of Pharmacy. And here I resolve the general queries of Global Pharma Academy students, assist them for the daily assignments, mock interviews, and I'm also handling the admissions query regarding any courses. So this is my contact number 9322341947, and this is my email ID globalpharmas516@gmail.com.
So if you have any questions related to the courses we provided here, you can connect with me through this email ID or through my contact. Okay. So here I welcome the admin of Global Pharma Academy. Her name is Akanksha Pawar. She completed the BSc and she is the admin of our organization, having responsibility of institute connection, periodically course student feedback, connect with institute student and content writing. So her contact number is 75585271. So moving to the next slide, mission and vision. So with the goal of educating every aspirant who want to work in the pharmaceutical sector, we offer education at most affordable price in India. And our goal is to lead the pharmaceutical training market on a global scale. And India should grow into a country known for innovation and quality. So we want to be the first global platform where business executives may select the top personnel in the pharmaceutical sector to satisfy the most recent industry demand. Okay. Moving to the next slide, benefits. So, benefits of our courses, like our students are trained and nourished under excellent faculties having 15 plus years of industrial experience and academic excellence. And here, students are rigorously trained to meet the industry requirement. Okay. Moving to the next slide, why us? Apart from domain knowledge, we provide communication skills, presentation skills, mini project, mock interview, personal development, provide job assistance, conduct examination and doubt clearing session. Moving to the next slide. So this is the syllabus that will cover during our 3-month online certification course in CPC Medical Coding batch number 3. So the business of medicine, of anatomy, overview of ICD-10-CM, applying the ICD-10-CM guidelines, accurate ICD-10-CM coding, introduction to CPT, HCPCS level 2 and modifiers, then integumentary system, musculoskeletal system, respiratory system, cardiovascular system, hemic and lymphatic system, mediastinum and diaphragm. After that, digestive system, urinary system and male genital system, female reproductive system, maternity care and delivery, then endocrine system, nervous system, special senses like ocular and auditory, anesthesia, radiology, pathology, laboratory, evaluation and management services, and med. So this is the syllabus that will cover during our course. So study material provided for CPC medical coding course. So we'll provide hard copy of CPC book and question papers, and we'll provide the soft ICD-10-CM code book and HCPCS code. Okay. So moving to the next slide, offline office address. So our this is our office, and our office address is Global Pharma Academy, flat number 1, Lakeview Apartment, Modern Colony, in front of Ambassador Hotel, FC Road, Pune. Okay. So this is our office address. So we visited the institute also for like offline session. So here are some photos that we took the career guidance session in various institutes. So moving to the next slide. Achievement. So we awarded as a top 10 most promising clinical research institute in 2024 by Silicon India, which is India's leading technology and business media company. We also awarded as a top 100 inspiring entrepreneurs of India by the Entrepreneurs of India. Okay, so these are our achievements. Moving to the next slide, certificate format. So once you're done with our course, we'll provide you this type of certification. Here, the MSME and ISO certified logo is also mentioned. Okay, so this is the certificate format. After that, how to enroll? Okay, so if you want to enroll for the CPC medical coding course, pay online, Google Pay, Phone Pay to this number 9423272876. After successful of payment, share payment screenshot with your name, email, location, qualification, WhatsApp number to this number 942327782876. After that, you will get the seat confirmation email, and before one day, all students will be added in class group on WhatsApp, where all class links and recordings will be shared. Okay. So duration and mode of our courses. So duration for this CPC medical coding course is 3 months, mode online, platform Zoho, and our batch will start from 27 April, and time for the classes is evening 4 to 6 p.m.
Classes scheduled only on weekends, Saturday and Sunday. And fees for this 3-month online certification course is 20,000. Okay. So moving to the next slide. Contact us. So these are our various social handles. We are on YouTube. Name is Things by Amit. We are on LinkedIn. Name is Global Pharma Academy. We are on Instagram. Name is Global Pharma Academy. So this is our website, globalpharmaacademy.com. After that, apart from this, we have our own academy channel also. Name is Global Pharma Academy on YouTube. You can check it. So these are some contact numbers. CEO Amit Kumar Mane, 9423272876. This is my contact number, 9322341947, and this is our HR contact number, 7499252772. So if you have any questions related to courses, career guidance, you can connect with us on this given number. So we are on mobile applications also. So here are some links. Android link, iOS link, and web link. So you can install our application in your phone. Okay. So moving to the next. Thank you. So this is the overall information regarding our 3-month online certification course in CPC Medical Coding batch number 3. So now onwards, if you have any questions related to the course, you can ask, or related to career, you can ask to sir also. So yes, sir. Now you can continue. Yeah. ये जो 20,000 जो फी स्ट्रक्चर है वो तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका ना, और जो सीपीसी का एग्जामिनेशन होगा उसका क्या फी होगा? वो फीस नियर अबाउट 62,000 है. 62,000. हाँ. कितने बार चांस मिलता है? क्या बोल रहे थे? तो 2 टाइम्स कितने बार आपको चांस मिलेगा. 2 टाइम्स. Like if you paid 62,000, now you have 2 chances for the exam. Any other question? Yes, students, any other question? No. Any question related to course? Yes, everyone. Nisarga, Nitesh, Sumit, Chanda, Praful, Hitesh, Komal, Nikita, Sania, Satish, everyone. Any questions? इसमें बुक भी मिलेगा क्या? हाँ, हार्ड कॉपी आपको सीपीटी का कोड बुक मिलेगा. उसमें आपको आईसीडी का भी मिलेगा और मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे. उनकी भी हम आपको हार्ड कॉपी शेयर कर देंगे कुरियर से आपके एड्रेस पे. हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी बोथ यू विल गेट. Any other questions, students? मैम प्लेसमेंट मिलेगा क्या अगर आपके यहाँ से सीपीसी सर्टिफाई करेंगे? Yes. After completion of our course ना 3 months कोर्स होने के बाद हम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए हेल्प करते हैं. यस, वंस यू कंप्लीट द सर्टिफिकेट और अगर आप सर्टिफाइड होंगे आप एग्जाम देने के बाद, तो हम आपको सर्टिफिकेशन के बाद प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करेंगे. अच्छा, ओके. Yes. Any other question? Yes. Nitesh, you want to talk anything? मैम सीपीसी एग्जाम देने के बाद प्लेसमेंट मिलेगी? हाँ, yes. मतलब like शुभांगी मैम, can you answer? यस,
क्योंकि ना अभी एचआर को ऐसा नहीं है कि हम नॉन सर्टिफाइड को भी नहीं शेयर करेंगे। हम नॉन सर्टिफाइड के वैकेंसी के टाइम अगर प्लेसमेंट्स है, अगर नॉन सर्टिफाइड के वैकेंसी है और अगर वहां पर इंटरव्यू दे सकते हो आप तो दे सकते हो, बट अगर आप एग्जाम देने के बाद सर्टिफाइड होंगे ना तब आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि आप सर्टिफाइड हो, आपका स्कोर अच्छा है तो आपको मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और जैसे कि आपको सर ने पहले ही बोला है कि अगर आप नॉन सर्टिफाइड से ज्वाइन करोगे तो आपको पेमेंट लेस रहेगा, और अगर आप सर्टिफाइड ज्वाइन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही 20 के मिल सकता है। तो वंस आप एग्जाम कंप्लीट करोगे, आप सर्टिफाइड होगे ना, तब आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ नॉन सर्टिफिकेशन। Yes, any other question? Yes, students, any other question? ऑनलाइन में मैम ये सॉफ्टवेयर ये सब कैसे सीख पाएंगे? सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कैसे होगा? सभी चीजें आपको जो कोड्स वगैरह फाइंड करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, आईसीडी एंड सीपीटी, वो सभी हम आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो लाइक जो सर है आपको गाइड करेंगे कि आपको वो डिक्शनरी कैसे हैंडल करनी है। तो सभी चीजें आपको ऑनलाइन सीखने के लिए मिल जाएगी। सीपीसी एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है मैम? वो एएपीसी कंडक्ट कराता है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर, और उनके जो सेंटर्स होते हैं वो लाइक सिटीज, मेट्रो सिटीज में होते हैं। तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, वहां पे जाके आपको देना पड़ता है इन एमसीक्यू फॉर्मेट। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उनका पासिंग क्राइटेरिया है 70%। वो ओपन बुक टेस्ट होता है, लाइक सीपीटी और आईसीडी डिक्शनरी जो भी कोड बुक है वो सेंटर आपको प्रोवाइड करता है। तो ओपन बुक टेस्ट होता है।